This is our x and y axis. This is x and y axis, and there is point P, and we have to move this point to this position Q, सही बना y dash. ठीक है, ये दो पॉइंट्स है. P को हमको मूव करना है Q की पोजीशन पर. ठीक है. सो मूव करने के लिए हमें पहले डिस्टेंस पता होना चाहिए. डिस्टेंस कितना मूव करना है. सपोज एक फॉर्म कर लेते हैं. सपोज this distance is px and this distance is py. ठीक है, this is y axis and this is x axis. The distance between this point and this point is px and py. Now px and coordinate y dash can be written as y plus py. This is obviously visible. Okay. Now this thing can be represented as in column representation as well as row representation. There are two representations. Okay. So this one, x dash y dash bracket close equals to x y plus xt and yt. This representation is called column representation, and the other way is row representation. X dash y dash equals to x y plus xt and yt. This is your row representation. Okay. So this is a basic formula for translation. Example देख लेते हैं. Suppose coordinate of P is 2, 3, and coordinate and the point and the movement that we have to give is Px equals to 4 and Py equals to 3. Okay, these are the coordinates for next point. तो represent करते हैं इसको x dash y dash is equals to 2, 3 plus 4 and 3. This equals to 6 and 6. Okay, so these are it. Now second thing that we have to see is scaling. Scaling means suppose if there is a line from this point to this point and say the length is x, and then when we will scale it, suppose 2x length, then it will become like this. Okay, expanding something या फिर contracting. ठीक है, छोटा करना है बड़ा करना. This is the work of scaling. ये देखते हैं कैसे होता है. इसको हम करते हैं using some scaling factor. ठीक है, इसमें एक टर्म यूज होगा scaling factor which is represented by sx or sy. Now in this case x dash becomes xx multiplied by x and y dash becomes sy multiplied by y. Okay, these are sx and sy are scaling factors. Sx and sy are scaling factors. Suppose if we have to just scale a point, एक point है जिसको हमको scale करना है, बड़ा करना है, फिर छोटा करना है, then the equation will be x dash y dash equals to, यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स यूज करते हैं.
This matrix is called transformation matrix of scaling. Sx 0 0 sy. This is multiplied by x and y. Okay. So this is called transformation matrix of scaling, represented by TS. ठीक है, ये तो एक पॉइंट के लिए फॉर्मूला है, ठीक है, बिकॉज एक्स एंड वाई कैन ओनली रिप्रेजेंट वन पॉइंट. ठीक है, ये जो एक्स एंड वाई हम यहाँ पे ले रहे हैं ये सिर्फ एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सपोज वी हैव टू स्केल अ लाइन. ठीक है, लाइन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ऑल विल बी द सेम. ts multiplied by, it will be x1 y1 x2 y2. ठीक है, x dash y dash. So this will be the formula for scaling of a line. Suppose if we have to scale a rectangle, तब क्या करेंगे? ts multiplied by x1 y1 x2 y2 x3 y3 and x4 y4. ठीक है, in this way we can just scale a rectangle also. ठीक है, जितने कोऑर्डिनेट्स होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, वो यहाँ पर हम ले लेंगे, एंड पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी. एक एग्जांपल देखते हैं. सपोज पॉइंट इज 2, 3 and sx that we have been given is 2 and sy is also 2. So our ts will become 2 0 0 2 and points we have been given are 2 and 3. This will result in 4 and 6. ठीक है, now next that we have to say is rotation. Third one is rotation. रोटेशन में क्या होता है? Suppose if we have a point P x y, ठीक है, इसे हमें किसी एक एंगल, सपोज दिस इज द कनेक्टिंग लाइन फ्रॉम द सेंटर and we have to just shift this point to some other point. ठीक है, रोटेशन हो रहा है along the zero. Now this thing, next position becomes p dash x dash y dash. ठीक है, suppose, okay, suppose this angle was phi and this new angle from center, this difference is theta. ठीक है, ये हम जूम कर देते हैं. And the length and distance from center to P. Suppose this distance is r. This is your x-axis. This is y-axis. तो रोटेशन के लिए हमें क्या करना होगा? x dash equals to x cos theta minus y sin theta. Y dash equals to x sin theta plus y cos theta. X dash y dash रिप्रेजेंटेशन कैसे है? cos theta minus sin theta cos theta multiplied by x and y.